Hello all, welcome to Pivotal Traders. So today again we are doing live trading for the Banknifty options. Currently I am having some positions. Let me show you here. So I have some positions in place and these are, let me show you here. So I have currently 35,500 calls and 35,000 puts, and this triangle is being played, and I was up around 45,000 profit in the morning, and there is some slight variation which is happening. Now the reason I'm not adjusting it is that because there's a possibility of a reaction from the black line here. You can see here there's a possibility that we might get a reaction from here and the price can swing like this. So other thing is that I'm also examining the data here, and in the data I have seen that quite an active put writing has taken place in the morning. And if I analyze the P minus E, let me also update you. I'm just opening it up. So currently if I see 35,000, both the call and the put writing is quite active at around 35,000, but the PCR is getting sluggish and it is declining. So the blue line is the PCR. So that means that there is some kind of bearishness coming into the market, and yes, we can see a spike is coming down on the downside. So will it sustain? That is the question. Whether the black line will be pierced with volume or not, that is another question. So we have to stay put and we have to see what all possibilities can arise from here. So good spike is coming up along, and will it hold this spike? India VIX has increased tremendously at around 3% approximately, and this is quite huge. So something fundamentally is changing into the market, and those news are getting into the picture. So if this fall continues, then I will be shifting my strangle into straddle. Last 6 minutes. It seems to be that the Bollinger Band is expanding and the volume is also increasing. You can see that the volume is quite increased now, and if the volume swells from here, then we might expect a continuity in this trend, because the trend was imminent, as also discussed yesterday. The trend is there in the market, that should come very sooner. So I will be shifting my calls to 35,000 now. Let's see how do we do. So quite bearish candle, and there is only one thing left now, that this candle should have some follow up. तो यहाँ पे एक follow up जरूर आना चाहिए candle का,
अगर ये generally नीचे जा, so let's see if there is a follow up to this candle or not. I have shifted my calls to 35,000. Now I am trading a straddle here of 35,000. I will adjust it accordingly. Let's see how it happens. So the price chart is there. This is the tick chart. This is the price chart. This is another price chart. So complete piercing of the black line on the 5 minutes candle has taken place with volume. So definitely there is some chance for this trend to continue on the downside, because there was a gap down opening and market tried to lift on the upper side, but it failed miserably and it hit the day's low and now continuing on the downside with volume. So this is what is required when there is a trend. We need volume, we need a good conviction. So that is all present right now here. So will it continue? Let's see. Five minutes left for the 15 minutes candle to close. So the VIX is also increasing with each passage of time. So I will be reducing my put selling. I have reduced it by 50% from 450 to 225. I have reduced my put positions here because I expect that there can be a more downfall from here. Though I haven't exited it completely, I will be doing that if this candle breaks down from here. So what I mean to say is that if this candle, this present candle, breaks the low of the preceding candle, then I will be looking to cover my puts here. So let's see if it happens. All we need is a prudent decision and a right time of the decision, and we just need to follow the system, nothing else, and everything will fall in place and you will be rewarded by each act. So guys, if you like this session like this, please share amongst your peers. Mahesh Basne is asking what is the trading capital. Sorry, I cannot disclose that here. So you can approximate whatever position I have. So how much capital it require, you can approximate that. Everything is open. You can transparently check what capital is there. So other thing is that let me share this. Okay, please share this link of the video if you like this session like this. It will help me keep motivated and I will be doing more of it. So we're waiting for the follow-up, only 1.5 minutes left now. There is no follow-up right now. There is some kind of wick formation on the 15 minutes candle, and let's see if it breaks this low of this preceding candle or not. So those of you who have joined new, so currently I have open position of 35,000 straddle, which was converted from 35,000 to 35,500 strangle. Now currently I'm trading the straddle here. Let's see how it folds, because I'm waiting that there should be a follow-up, and this can be a pause and then there can be a follow-up, because it has broken the day's low and now it is going on the downside.
So volume was good enough. Volume was there. So all we need is that a support for the volume, nothing else. All we need is a support. Uh, I can see a spike. You can see the VIX. Guys, look at the VIX here, 3.23%. When we started this video, it was around 2.8%. So the VIX is consistently increasing, which is telling us that there is something happening in the market, and there is some kind of news or some kind of event which is happening, or some kind of event it is about to be unfolded today or today evening. So that's why the VIX is increasing. But let's see how it happens. Will it break the low of this preceding candle? The low of this preceding candle. Let's see. तो जो लोग हिंदी में जानना चाहते हैं, तो अभी जो हमारे पास जो ट्रेड अभी हो रहा है, 35,000 का हमने पुट और कॉल दोनों सेल किया हुआ है, एक स्ट्रैडल बनाया है और उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मार्केट से पहले, इस स्ट्रैडल से पहले मैंने 35,000 और 35,500 का स्ट्रैंगल बेच रहा था। अभी एकदम से एक डाउनफॉल जो आया है ये वाला विद वॉल्यूम, अगर यहाँ पे देखो, ये देखो वॉल्यूम बहुत अच्छे से आया है। तो ये वॉल्यूम के साथ अगर ये कंटिन्यूटी नीचे आती है, ये वॉल्यूम के साथ, तो फिर ये और डाउनफॉल आ सकता है। यहाँ पे एक ब्लैक लाइन भी इन प्लेस था, तो ब्लैक लाइन का रिएक्शन अभी नहीं मिला है। ब्लैक लाइन का पीएसमेंट हुआ है विद वॉल्यूम, विद गुड मोमेंटम, विद गुड गुड वेलोसिटी। अगर ये चीज़ कंटिन्यू होती है, नीचे की तरफ जाता है ये, तो यहाँ से एक बार ब्लैक लाइन को ये ज़रूर टच करेगा, टाइम स्पेंड करेगा, फिर दोबारा से ये मोमेंटम को नीचे लेके ऐसे नीचे आ सकता है। सो वी आर जस्ट वेटिंग कि कुछ एक्शन अभी यहाँ पे हमें को मिल जाए, तो देखते हैं क्या ट्रेड आता है। अगर हम डेटा की बात करें, डेटा को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या चल रहा है डेटा में। तो डेटा में अगर हम देखें तो क्यूमुलेटिव ओआई में आप देखें तो पीसीआर ने एक बार ट्रेंड को ट्राई किया कि पीसीआर एक बार ऊपर जाए। पीसीआर ऊपर जाने की एक बार कोशिश किया उसने यहाँ पे आफ्टर 10 o'clock, बट वो फेल हो गया वहाँ पे। तो ये फेलियर जो है पीसीआर का एकदम से विजिबल है यहाँ पे। यहाँ पे जो फेलियर यहाँ पे हो गया, यहाँ से दोबारा से ये नेगेटिव हो गया पीसीआर। जो कॉल और पुट राइटिंग का जो टग ऑफ वॉर है वो ज़्यादा आज एग्रेसिव नहीं है। कॉल राइटिंग थोड़ा ज़्यादा है, पुट राइटिंग थोड़ा स्लगिश हो गया है, कल उल्टा था। तो ये अभी डेटा का सीन है। ये जस्ट थोड़ा सा समरी दिया हूँ डेटा का, बिकॉज अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक मूव थोड़ा कंटिन्यूटी नीचे की तरफ आना चाहिए। लेट्स ओपन 3 मिनट चार्ट, दो दिस इज नॉट द टाइम, 11:15 इज नॉट द टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ बिग मार्केट मूव, बट लेट्स सी कैसे ये यहाँ पे बिहेवियर आता है। आई एम जस्ट वेटिंग कि एक बार ये ब्लैक लाइन को टच कर ले, फिर वहां से एक रिएक्शन आए नीचे की तरफ। आई हैव ओपन 1 मिनट चार्ट नाउ। I just needed to kiss the black line and say bye bye, final goodbye to the black line. Will it happen? Let's see. So pending goodbye is there for the black line. Will it happen? So guys, if you like these videos like this, do hit the like button and share amongst your peers. Definitely I will bring more of these contents. And yeah, there is an attempt to kiss the black line, guys. There is an attempt. Come on. So the maximum action will be there only around the vicinity of the black line. So that is what we are expecting here. And we want to get the same thing. Can we get a good hug and goodbye to the black line? I think there is an attempt. Let's see if it translates. Yes, 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 there is an attempt. So let's see the 15 minutes candle, how it is folding. Yeah, 15 minutes candle has broken the black line and now it is kissing the black line and saying bye bye.
So let's see if it is a bye-bye or only a trap. If it is only a trap or the bye-bye. If this is a trap or bye-bye. Let's see. So guys, you can see 1 minute candle I have opened, and look at the beauty of the black line here. Look at the beauty of the black line. It kissed the black line, and that is what I told you, that it will kiss the black line, say the final bye bye if it intends to go on the downside. Now let's see how much far it can go. How much far? That is another question now. We have received the reaction to the black line. Now how much far it can go, guys? 33 points. 35 points. How much more? We need somewhat around 100 and 150 points. That is what the character of the black line is. Whenever it hits harder. Can we get that? Can we get 100 points reaction from the black line? I'm waiting. Guys, do comment your queries, your questions, your views, your feedbacks. How do you like these sessions to be going? And I hope you like the videos like this, and it will help you motivated and also help me gain the knowledge. So can we get a reaction to the black line? Come on, guys. Yes. Come on, come on. 35 points, around approximately 40 points. We need 50 points. Reaction to the black line. Can we get it now? The market participants is kind of absent, but don't worry. There's always some action around the black line. कुछ ना कुछ ब्लैक लाइन के आसपास जरूर होता है, और ये प्रोबेबिलिटी है इसकी, जो मैं ये चीज कहता हूं आपको, और ये पॉसिबिलिटी हमेशा एक प्रोबेबिलिटी ही रहती है. जब मैं बोलूंगा यहाँ पे एक्शन होगा, दैट मीन्स कि 100 में से 80 बार ये होगा, ये नहीं कि हमेशा ही होगा. So yes, there is somewhat around 50 points now reaction. Can we get 100 points now? Can we get something larger and beautiful from the black line? I'm waiting. Yes, 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 yes. So you can see एकदम 1 मिनट के चार्ट पे मैंने ये रिएक्शन आपको दिखा दिया कैसे हुआ है. तो ये कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब when you know how does the black line works. And if you want to know more about this, how do I deduce black line, how do I work on it, how do I present the confidence with the black line, then email me at pivotaltraders@gmail.com. I'll let you know if I have any batches to be coming around. I'll enroll you over there. So look at this now. It is going to break day's low from the black line, exactly from the black line. Can we get a good down spike? Yes, yes. We need to get 110 points from the black line. Can we get it now? Yes. Let me show you my position. So look at this, my position, what I have done. So मैंने जो position बनाया था, जो straddle मैंने continue किया था, उस straddle में अभी देखो. Let me take something. इस straddle में अगर आप देखें तो मैंने एक stop pause लिया यहाँ पे. अगर मैं आपको अपना ट्रेड दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे देखो 35,000 पुट्स है, ठीक है. मैंने इसको सेल करा हुआ था, राइट. अब मैंने यहाँ पे एक स्टॉप पॉज लिया. स्टॉप पॉज मेरा एक स्ट्रैटेजी, मेरा एक हॉलमार्क स्ट्रैटेजी है जो मैं लेता हूँ जब भी मैं देखता हूँ कि मार्केट में एक साइड का मोमेंटम ज्यादा आ रहा है, एक साइड का मूवमेंट ज्यादा आ रहा है, तो मैं उसको पॉज कर देता हूँ. जैसे यहाँ पे मेरे को पता था कि ब्लैक लाइन का रिएक्शन आ रहा है, तो पुट साइड पे पॉज लेना चाहिए, तो मैंने ये 323 पे मैंने पॉज लिया. ओके, फिर मैंने 50% क्वांटिटी 335 पे दोबारा से सेल कर दिया. देखो, राइट.
फिर बाकी 50% क्वांटिटी 352 पे सेल किया। अभी देखो कहाँ पे सेल यहाँ ट्रेड कर रहा है 352 के आसपास। तो आई हैव टेकन दिस पॉज। कितना ये कितने पॉइंट्स का पॉज हो गया अप्रोक्सीमेटली, अगर देखा जाए 323 से 352, और ये अप्रोक्सीमेटली मोर और लेस 28-30 पॉइंट्स का ये मैंने डिफरेंस लिया है, राइट। सो ये स्टॉप पॉज का मेरे को ये 28 पॉइंट्स का यहाँ पे बेनिफिट मिल गया, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी होती है जब व्हेन यू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड यू आर रेडी टू टेक द रिस्क। ऑप्शन सेलिंग इसका मतलब ये नहीं कि भाई कोई रिस्क लेके नहीं बैठे हैं। अगर रिस्क लेके नहीं बैठेंगे तो पूरा दिन बैठे ही रह जाएंगे, राइट। एंड आवर मोटिव इज टू मेक मनी इन द मार्केट, एंड दैट्स व्हाट वी कैन डू। We can do it very beautifully. We can, yeah. Okay. So look at this now. We have got how much point from the black line? Somewhat around 80 points from the black line reaction we have got. 80 points in one day is very, very good, right? So that is the confidence around the black line I have developed over the years, and this has led me to believe in it. I hope you also like it, and do share it with your friends, because this is something which many people might be struggling with the trading, and this is the simplest thing which I have scaled down to. तो स्केलिंग में ट्रेडिंग में आपको सिंपल चीज चाहिए, सिंपल चीज, और ये ब्लैक लाइन वही चीज करती है। ये मैंने इतना सिंपल बना दिया ट्रेडिंग को कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको एक सिंगल कलर का लाइन चाहिए जो आपको बता दे कि इसके नीचे डाउन होगा, इसके ऊपर अप रहेगा। यहाँ पे ब्लैक लाइन का अगर कोई आएगा तो यहाँ से रिएक्शन मिलेगा। अगर रिएक्शन मिल गया एक बार तो दूसरी बार ये ब्रेकआउट होगा। अगर ब्रेकआउट हो गया तो ये कितना नीचे जा सकता है। इंटेंसिटी, टोटल एक्शन, यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है ब्लैक लाइन के आसपास मिलेगा। So we can see now the price is retracing back. Let's open 15 minutes candle now. बहुत अच्छा रिएक्शन हमें मिल गया, डेज लो भी ब्रेक कर दिया। नाउ ये 15 मिनट्स का कैंडल एक पॉज ले रहा है। अगर आप देखो मार्केट कभी भी एग्जॉस्ट हो जाता है। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन तीन रेड कैंडल्स बनाया है इसने ब्लैक बैक टू बैक। अब तीन तीन रेड कैंडल बनाने के बाद guys, I have to warn you here, there is a lag in the telecast. So telecast में somewhat around maybe I guess 30 seconds का lag है I guess, yeah. So be careful with your positions. जब मैं बोल रहा हूँ तो जब भी बोल रहा हूँ तो 30 seconds already गुजर चुके हैं। तो you have to manage your trades accordingly. Do not get irritated or disheartened. So here you can see that 1 2 3, it has taken a quite a digger. Now it has to take a pause here. तो ये जो फोर्थ कैंडल है अभी एक पॉज ले रहा है। अब ये पॉज लेने के बाद अगर ये अपसाइड मूव भी कैंडल बनाता है तो ये पॉज ही कहेंगे इसको, क्योंकि ये इसने इंटेंशन क्लियर कर दिया है। इसने डे का लो जो है, ओपनिंग रेंज जो है, ओपनिंग रेंज बनाया, फिर उसका ओपनिंग रेंज को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। तो देखो ब्लैक लाइन से बहुत अच्छा रिएक्शन आ रहा है दोबारा से, बहुत ही ब्यूटीफुल रिएक्शन आ रहा है। मे बी विल गेट 100 पॉइंट्स फ्रॉम हियर नाउ। ब्लैक लाइन का जो स्टॉप लॉस होता है 50 पॉइंट्स इसके ऊपर होता है। तो अभी भी ब्लैक लाइन का जो ट्रेड है दैट इज इंटैक्ट। लेट मी ऑल्सो सी माई पोजिशन मीनवाइल, कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें कुछ बेटर कर सकता हूँ तो आई विल डू।
So currently it is just a pause phase. You can see that the market is heated when it is having a downfall like this. It's just taking for pause, and it might take a swing from here and spend a lot of time around the 35,000, which is the psychological level, and can break it at a perfect time. तो perfect time क्या होता है? Perfect time का मतलब होता है सुबह 9:15 से 10 बजे तक। परफेक्ट टाइम होता है 12 बजे। परफेक्ट टाइम होता है 1:45, 2 o'clock, ठीक है, 2:30। ये परफेक्ट टाइमिंग्स है। ये टाइमिंग को याद कर लो, मतलब अपने दिमाग में बस उसको टैटू कर लो जिस तरह से भी। ये टाइमिंग पे अगर मूव्स आते हैं तो उसकी प्रूडेंसी रहती है, उसकी जेन्युइनिटी रहती है, उसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। अगर इस टाइम के अलावा जब भी मूव्स आते हैं वो ज़्यादा सस्टेन नहीं होगा। अभी 11 बजे का मूव आया, अभी ये कोई मूव नहीं है, ये कोई मे बी कुछ इवेंट, कुछ न्यूज़, कुछ है मार्केट में। देखो विक्स कितना 4%, ऑलमोस्ट 4% ये अप हो गया है। तो विक्स बहुत ज़्यादा अप हो गया है, बहुत ज़्यादा स्केयर हो रही है मार्केट में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फील कर रहे हैं जो जो भी पोजीशन अभी होल्ड करे हुए हैं। बिकॉज विक्स कैसे होल्ड अप होएगा? देखो विक्स का सिंपल फंडा है कि जैसे मार्केट में बहुत सारे बिग इंस्टीट्यूशंस ने एक पोजीशन ले रखा है, ठीक है, वो पोजीशन तो फ्यूचर्स में लेते नहीं है, पोजीशंस वो लेते हैं स्पॉट में, कैश मार्केट में। और जब वो कैश मार्केट में पोजीशन लेते हैं और उनको लगता है कि कोई एक नया बड़ा इवेंट आने वाला है, तो उसको वो क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं। अब उनको इंश्योर करने के लिए उनको क्या करना होता है, उनको फ्यूचर्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। फ्यूचर्स मार्केट इज ओनली एंड ओनली फॉर समवट फॉर द पीपल हु कैन वांट टू गेट एन इंश्योरेंस, राइट, जो उनके पोजीशंस हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सके, और दे विल जस्ट बाय इट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ एन एनी इवेंट और एनी डिसीजन मेकिंग पॉइंट और एनी काइंड ऑफ न्यूज। एंड वंस द न्यूज और द इवेंट सबसाइड्स, वो उसको बेच देते हैं। तो वही चीज कि जैसे ही एक इवेंट आता है, जो बिग इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ऑप्शंस, start participating in the futures, and when they do that they kind of spike the premium of the options। और जब प्रीमियम स्पाइक होता है तो प्रीमियम का जो एट द मनी का जो प्रीमियम का जो प्राइस होता है, उसका जो कंजक्चर मिलता है हमें, उसका प्राइस हम देखते हैं, उसका प्राइस का वॉलेटिलिटी डिफाइन होता है, उसका प्राइस से ही वॉलेटिलिटी डिफाइन होता है कि कितना उसमें वेरिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब उसका वेरिएशन अगर ज्यादा आ रहा है विज विज प्रीवियस हिस्ट्री, प्रीवियस टाइम्स, देन यहाँ पे विक्स में इंक्रीज आएगा। अब विक्स में इंक्रीज कब आएगा? जब वहां पे एट द मनी जो स्ट्राइक्स हैं उसके प्राइस जब इंक्रीज होने लगेंगे। एट द मनी प्राइस इंक्रीज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग ज्यादा ज्यादा हेज कर रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट टेल्स अस दैट जब मार्केट में कुछ पिक्यूलियर मूवमेंट का वेट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग हेज करते हैं। और हेज करने का मतलब ही क्या है कि एक लोगों में डर है, राइट। So this live session will be intact. I'm requesting Ankur if he can participate in this. Nevertheless, I have to go somewhere. Please pardon me. So I will be away for around 30 minutes or so. So I'll be resuming this streaming after that. So you can also take some pause. I will be resuming and coming back at around 12:30.
Welcome back, everyone. Sorry, I got over jumped to the time scale. So let's resume our trading and let me summarize what is happening right now. So as I said that the market should spend quite a little bit more time around the 35,000, which is the psychological level, and that is what is exactly happening, and there is no surprise in that. So this is what is the position which you are seeing on your screen. So currently we are having the straddle which is going quite fire. Let me just do a little bit of adjustments here. Okay. So what is seeing on your screen is the 35,000 straddle, which is giving decent amount of decay now, and that has been chunked in from the point where there was a spike in the VIX, और जो विक्स का जो स्पाइक आया तभी हमने पोजीशंस के एडजस्टमेंट्स किए. तो देखो, इससे एक लर्निंग आप यहाँ से ले सकते हो कि जब भी आप एक एडजस्टमेंट करते हो, वो ये मत सोचो कि तुम्हारा प्रॉफिट चला गया यार, अगर मैं अपने ओरिजिनल जो पोजीशंस थे उसको होल्ड करता तो प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा. ऐसा नहीं रहता है. इफ़ यू गिव रिगार्ड टू द मार्केट, जैसे जैसे आप मार्केट को रिगार्ड करोगे कि भाई आई एम गिविंग अप एंड यू आर द एक्सीलेंट बॉक्स, and when you give regard to the boss, definitely the reward will come along. और अभी देख रहे हो हमारा पोजीशन जो अराउंड ये 45,000 से 31,000 हो गया था, राइट. एंड नाउ इट इज बैक टू 35,000. मैंने क्या किया था, मैंने सिंपली स्क्वायर अप किया अपने जो मेरे कॉल्स थे 35,500 पे, मैंने उसको शिफ्ट करके 35,000 पे ले आया, मैंने स्टार्टर बना दिया, राइट. तो इससे यही लर्निंग आती है कि जो मार्केट अगर दे रहा है उसको आप एक जो इंफॉर्मेशन है, वट एवर इंफॉर्मेशन इज देयर, दैट इज हैविंग वैल्यू. एंड वैल्यू इसलिए है बिकॉज मेनी ट्रेडर्स माइट बी losing their capital just to not regard those values, those facts, those points, right. So that's what I believe, that whenever you see a possibility that there is an information out there and the price is reflecting those information, you should tap into it and you should just act on it. Now again I'm seeing a possibility where the 35,000 is clearly getting broken and it is also a apt time after 1 o'clock. So 1 बजे के बाद ये मूव अगर आते हैं तो इसकी बहुत ही ज़्यादा जेन्यूनिटी रहती है, बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि ये कंटिन्यू करेगा. तो लेट्स जस्ट डू दैट. तो हम लेफ्ट साइड पे एक कॉल रख देते हैं विच इज़ स्लाइडिंग वेल, और राइट साइड पे हम पुट रखा हुआ है हमने, ठीक है. ये आप पुट देख रहे हैं. अब इसको कैसे मैनेज करना है, लेट्स जस्ट ट्राई टू मेक सम डील ओवर देयर. ओके. सो जैसे जैसे वॉल्यूम अभी बढ़ रहा है एक तरफ, तो मेरा जो एनालिसिस रहना चाहिए कि ये 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस अगर करता है तो किस पॉसिबिलिटी पे क्रॉस करता है. तो लेट्स जस्ट टेक अ व्यू ऑन प्राइस वर्सेस ओआई हियर एंड लेट्स गो टू बैंक निफ्टी. एंड बैंक निफ्टी में जाने के बाद हम यहाँ पे पीसीआर डालते हैं 35,000 पे. तो पीसीआर देखो 35,000 पे. लेट मी मेक इट लिटिल बिट मोर क्लीनर. हाउ डू आई मेक इट क्लीनर? Okay, let's remove this ATP and all.
तो अगर आप ये देखो, ये OI देखो, अगर प्राइस को भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, अभी एक बार इसको हम एनालाइज करते हैं, तो दोनों का PCR जो है सेम रहेगा। अभी आप देखो, जो कॉल की जो राइटिंग है वो इंक्रीज होती चली जा रही है, राइट, और पुट की जो राइटिंग है देखो इसमें भी इंक्रीज आ रहा है, लेकिन ये देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है जो कॉल राइटिंग का, दैट इज लिटिल बिट मोर ग्रेटर। तो इसके वजह से जो अपना PCR, विच इज द PCR इज द पुट कॉल रेशो, पुट ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल ओपन इंटरेस्ट, जो पुट राइटिंग है वो कम है, पुट राइटिंग इज sluggish and the call writing is increasing. So overall this whole ratio is declining, and that is why you can see the blue line here, it is declining here. So ये जो decline जो आ रहा है मार्केट में PCR का, it is favoring the bearishness, right? अगर हम इसका प्राइस को अब एनालाइज करते हैं, प्राइस और एवरेज टू प्राइस का बस निकाल लेते हैं, प्राइस एंड एवरेज टू प्राइस, तो अब ये एनालिसिस को देखो कितना सिंपल एनालिसिस हो जाता है। ये एवरेज टू प्राइस है, जो ग्रीन लाइन जो जा रहा है, एक कंजेशन बनाया, बाद में नीचे आया, बाद में फिर इसको ब्रेक किया, ये सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया, फिर दोबारा पे यहाँ पे आया प्राइस, दोबारा से नीचे आ गया, राइट। बहुत सिंपल है, राइट। अब यहाँ पे पुट साइड पे देखो एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है, ये कंजेशन बनाया, कंजेशन के नीचे गया, कंजेशन ब्रेक किया, फिर दोबारा यहाँ पे सपोर्ट था, दोबारा सपोर्ट पे लेने आया, ट्रैप करा, फिर ऊपर चला गया, राइट। अब ये कंटिन्यूटी कितनी हो सकती है, ऊपर ऊपर वाला ऊपर जा सकता है, बिकॉज इट वॉज इनफ अमाउंट ऑफ टाइम, यहाँ पे ये एवरेज टू प्राइस पे इसने दोनों ने एक आके यहाँ पे कंप्लीटनेस दिखाया है, राइट। अब जब भी 340 के आसपास अगर ये पुट आता है, डेफिनेटली इट शुड गिव सम रिएक्शन, ठीक है। तो एक तो एनालिसिस यहाँ पे एक आया, एक नंबर 1 कि 340 से ऊपर जब भी पुट का प्राइस अब इंक्रीज होगा 340 पे आने के बाद, तो उसमें ज्यादा रिएक्शन आ सकता है। एक फर्स्ट डिडक्शन हमने यहाँ से निकाल लिया। नाउ सेकंड डिडक्शन क्या हो सकता है, जो कॉल है वो अप्रोक्सीमेटली समवट अराउंड 310 के आसपास, जो 310 है, 310 के आसपास अगर कॉल राइटिंग कॉल का प्राइस आता है तो वहां से उसको डिक्लाइन होना चाहिए, ठीक है। अब हम ये एनालिसिस, ये डिडक्शन जो हमने किया है पुट और कॉल का प्राइस पे, अब यहाँ पे एक बार डाल देते हैं। तो पुट का मैंने जैसे बोला था ना, 340 के आसपास अगर आता है तो क्या रिएक्शन देगा, तो अभी एग्जैक्टली 340 के आसपास ही है ये, तो 340 से के आसपास ही है, यहाँ से एक जंप लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ से एक जंप लेना चाहिए इसको। सिमिलरली 310 के आसपास, 310 के आसपास अगर ये आता है यहाँ पे इस साइड में, तो इसको यहाँ से जंप लेना चाहिए, राइट। तो हमने दोनों का एक वाइट रीजन बना लिया है जहाँ पे हमें कोई एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्शन किस तरह का होना चाहिए, वेदर इट शुड बी स्टॉप पॉज, वेदर इट शुड बी दैट हम सारा ही पोजीशन एग्जिट कर लें, उसकी पॉसिबिलिटी तभी अराइज होगी जब हम वॉल्यूम देखेंगे। सो लेट मी जस्ट शो यू द चार्ट हियर। अभी बैंक निफ्टी का ये चार्ट चल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे हमें वॉल्यूम जैसे जैसे दिखेगा नीचे की तरफ, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, वट एवर इज द केस। अभी तो क्या किया है इसने, वीवैप से बहुत अच्छा ब्यूटीफुल रिएक्शन दिया है, वीवैप से, राइट। अभी ये चीज कंटिन्यू कितना होता है और वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, तभी हमें कुछ फेवरेबल पॉइंट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। ना अगर हम ब्लैक लाइन की बात करें, अगर ब्लैक लाइन की अगर बात करें, देखो ब्लैक लाइन बहुत अच्छा सुबह रिएक्शन दिया इसने, यहाँ पे अबाउट समवट अराउंड 80 पॉइंट्स का रिएक्शन हमने सुबह लिया था इसमें। लेट मी क्लीन इट अप। तो 5 मिनट्स का चार्ट खोलेंगे। अभी देखो ये बहुत अच्छा इसने पैटर्न बनाया है, यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे जिगजैग पैटर्न ये बना के डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में ये जाता चला जा रहा है। और जब भी अगर ये वेलोसिटी आप देखें, ये जो डाउनफॉल का जो वेलोसिटी आ रहा है, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी आया
अराउंड 239 पॉइंट्स का फॉल आया, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉल 239 पॉइंट से ज्यादा का होना चाहिए, तभी ये कंफर्म करेगा कि भाई इसका ट्रू इंटेंशन है नीचे जाने का, राइट। बिकॉज अगर हम यहाँ पे बात करें, जब भी इंक्रीज हुआ है 144 पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ है और उसके बाद ये 148 पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ है। एक्चुअली इसका इंक्रीज का इंटेंसिटी यहाँ पे कम होना चाहिए था, ये कम नहीं हुआ, ये वाला कंपेयर टू दिस has to be lower. So that's why the velocity in which it went up, it took only 13 bars. यहाँ पे देखो 14 bars इसको लगे अब जाने में, यहाँ पे 13 bars लगे. That means the velocity, the speed in which it went up was higher. The points where what it captured was higher, and that's why the only thing which can prove कि यहाँ पे एक इंटेंसिटी है उसका नीचे जाने के लिए, वो तभी हो सकता है जब इसका जो फॉल जो था 239 पॉइंट्स का जो फॉल था, यहाँ पे 240 पॉइंट से ऊपर का फॉल जरूर आना चाहिए। जब 240 पॉइंट्स के ऊपर का ये फॉल यहां से लेकर यहां से नीचे तक आता है अगर, ठीक है, उसके बाद जो इंटेंसिटी ऑफ फॉल है वो इंक्रीज होना चाहिए, राइट। तो दिस इज बेसिक काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, जो आपको मैं स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, जो मतलब थर्ड ग्रेड में पढ़ा होगा ना, उसी से मैं बता रहा हूं कि कैसे ये चीजें को सिंपली हम एक तरह से जेल इन करके अपने एनालिसिस को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, राइट। तो विल जस्ट वेट फॉर इट। तो अभी देखो यहाँ पे जो प्राइस पॉइंट है 340 का ऑन द पुट साइड, अभी उसके आसपास ही ये घूम रहा है। अभी वहां से इसको एक एक डिसीजन लेना चाहिए। अब वो कब लेता है, ये 310 के पास आएगा तभी लेगा कि कब लेगा, विल वेट फॉर इट, ओके। I hope guys you are liking the video. Hi Sudish. So if you have any questions, any queries, please comment it in the chat box. And definitely I'll be conducting more of these sessions. I hope this will give you some confidence in option selling, and it will also give you an psychological kick how to just stay put to the positions and how to adjust them live. And these market scenario every day is different, right? So it will give you learning every day very differently. So देखो 340 के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा ये सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा सपोर्ट दिखाएगा। व्हाट आई विल डू इज, ये 450 से मैं सीधा 225 इसको कर दूंगा, सीधा हाफ कर दूंगा। आई परचेज दिस बैक, आई एम रेडी विद दैट ऑर्डर, बट आई हैव टू सी सम स्विंग ऑन दी कॉल साइड नीचे की तरफ। आई हैव टू सी सम स्विंग हियर और नीचे की तरफ। आई हैव टू सी सम स्विंग हियर ऊपर की तरफ, ऐसे। तो जब ये चीज दोनों कंबाइन होगी ना, तभी मैं इसको एक साइड को मैं स्टॉप करूंगा, उसको पॉज लूंगा, फिर दोबारा से उसको रिज्यूम करूंगा। बट दैट कैन ओनली हैपन व्हेन देयर इज इनफ कन्विक्शन फॉर मी। हाय लॉजिकल ट्रेडर, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
ओके, वी हैव हिट 310 ऑन दी कॉल साइड। अब यहाँ से एक डाउन साइड आता है कि नहीं आता है, दैट इज ओनली लेफ्ट फॉर अस। यहाँ से एक स्विंग डाउन साइड पे आना चाहिए, कॉल साइड पे 310 का जो पॉइंट है, जो एवरेज टू प्राइस के और हमारे वाइट बॉक्स के आसपास ये स्विंग कर रहा है, यहाँ से एक ऐसे स्विंग इसको लेना चाहिए, राइट। अगर इसका ट्रू इंटेंशन है नीचे जाने का, अगर नहीं जाता तो हमें कौन सी जल्दी है कोई चीज़ की, हमने तो स्ट्रैडल बेचा हुआ है, हम तो आराम से बैठे रहेंगे, जल्दी तो ऑप्शन बायर्स को होगी। Very happy to know, logical trader, that you have been following us for the past 1 year. 1 year is quite a longer time to assess what we do and how well we do. So thank you so much for staying put for so long. Definitely, I also expect that I can preach something and give you some knowledge of whatever thing I have learned so far. Let's also see the data. Data में क्या हो रहा है? Data में PCR again is very sluggish, and the P minus C we just analyzed. Let's also look at the P minus C. Let's look that, and further let's also look at the OI breakup on the Bank Nifty OI breakup. Let's look at the 30 minutes. So there were many instances of short covering here. तो वो शॉर्ट कवरिंग जब भी आया शॉर्ट कवरिंग बहुत ही कम मैग्नीट्यूड से आया, इसलिए ज़्यादा सस्टेन नहीं हो पाया। बट देर वर इंस्टेंसेज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। जब भी यहाँ पे होता है शॉर्ट कवरिंग का इंस्टेंस, वो 2 बजे के बाद इंटेंसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो यस गाइस, देयर इज अ पॉइंट टू नोट कि शॉर्ट कवरिंग का एक चांस यहाँ पे आ सकता है, बिकॉज मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ ये शॉर्ट कवरिंग एक बार आता था फिर नहीं आता था। आज 1 2 3 4 इंस्टेंसेस ऑन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। सो दिस इज अ अनयूजुअल थिंग फॉर द बैंक निफ्टी। अगर 15 मिनट्स पे देखें तो और ज़्यादा दिखेगा पॉइंट्स। So yes, there are many instances of short covering. Now what you are witnessing also, that 20 moving average is being faced by the Bank Nifty here. So it faced once here, and it gave a good amount of reaction. Then faced on the second time, then did not give a good reaction. So maybe this is a swing like this. So we have to अगर हमें देखना है कि अगर फॉल होता है तो किस इंटेंसिटी से होगा, अगर वो स्विंग ऊपर लेता है तो कितने इंटेंसिटी, हमें सारे उसके पॉजिटिव और नेगेटिव सारे पता होने चाहिए। तो हमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब पता रहेगा एक चीज का, एक एनालिसिस का, तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग है उसको ब्रेन ऑटोमेटिकली ऐसे कैलकुलेट करेगा माइक्रो सेकेंड्स में कि हम अपनी डिसीजन ऐसे ऐसे चुटकियों में लेंगे। जब डिसीजन हम लेने चालू कर देंगे ना ट्रेडिंग में, फटाफट ट्रेड जब डिसीजंस लेंगे, तब हमारी प्रूडेंसी, हमारा जो सक्सेस रेट है, जो विनिंग प्रोपोर्शन है, वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो yes, it's facing resistance at 20 moving average. Most probably it should break on the upper side. We're also witnessing that there are many instances of short covering in the Bank Nifty futures. So that is another thing. And if I also say you out of my experience that if there was a behavior of the PCR in the morning, so the PCR behavior in the morning, as you can see, there was a dump and then there was an increase. So this increased behavior, इवन दो देयर वाज अ फॉल, इट वाज नॉट मच सस्टेन्ड। ये देखो फॉल होने के बाद ये बस साइडवेज हो गया। अब यहाँ से ये अगर नीचे जाता है ना, तभी ये प्रूव करता है यहाँ से मे भी एक स्विंग एक ऊपर ले जाए। जब अगर ये स्विंग ऊपर की तरफ अगर ये ले जाता है ऐसे, तो एक शॉर्ट कवरिंग, ये सारी चीजें जब कंबाइन होगी ना, एक लीथल कॉम्बिनेशन बनेगा शॉर्ट कवरिंग का ऊपर जाने के लिए। तो लेट्स सी कैसे होता है, क्या होता है। तो अगेन जैसे 310 के आसपास मैंने बोला था जो कॉल का है, एक रेजिस्टेंस वहां पे लेना चाहिए, तो रेजिस्टेंस वहां पे बहुत ब्यूटीफुली वहां पे ले रहा है। So there are many comments. Let's just check. Okay, slowly getting to learn. Okay, sir. How do you manage position when sudden algo candle comes in one side? See, when you are into options selling, there is nothing to manage whenever there is a algo candle. Just many times it happens is कि मैनेजमेंट का पॉइंट यही रहना चाहिए कि लेट्स सपोज यू हैव मेड प्रॉफिट ऑफ 45,000, you cannot let it slide below 30,000, 28,000 और सो। आपको मार्केट का कंडीशन का कुछ नहीं पता, आपको ये पता है ना कि आप कितना गारंटी करके ले जा सकते हो, कितना छोड़ सकते हो। तो वो चीज़ को पकड़ के
आप मैनेज कर सकते हो। बहुत ईजी है वो सब चीज़ को कैंसिल फॉलो करना। अगर आप नॉन डायरेक्शनल, ऑप्शन सेलिंग का मतलब ये है कि नॉन डायरेक्शनल करते रहो तो ज़्यादा बेनिफिट है। अगर वो करते हो, देखो एक मूव आ रहा है, लुक एट इट गाइस, कैन इट सस्टेन, ऑल वी नीड इज अ फॉलो अप कैंडल। तो वही मैं कह रहा था कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो नॉन डायरेक्शनल, तो एल्गो कैंडल एक स्पाइक देता है, वापस वहीं पे आ जाता है, तो ज़्यादा उसमें नहीं होगा। हाँ, कई बार इमोशंस में क्या करते हैं, उसको कवर कर लेते हैं, फिर कवर कर लेते हैं, जैसे कल ये हुआ था। इफ़ यू वॉच माय यस्टरडेज वीडियो, लाइव वीडियो, तो उसमें ये बहुत इंस्टेंसेस आए थे, हमारा प्रॉफिट 25,000 से 11,000 हो गया, 8,000, ऐसे ऐसे हुआ। एंड ऑफ द डे वी वर बैक टू 22,000, सो आई हैड टू मैनेज दैट। तो यू कैन वॉच यस्टरडेज वीडियो, उसमें बहुत सारा लर्निंग है, विल गेट टू नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। So guys, there is some kind of momentum happening around the 310 and 340 levels as we identified. So we made two deductions. Now we have also made deductions that there were instances of short covering. So एक short covering का अपने दिमाग में जरूर रखना। और हाँ, those of you who are watching this video, just keep in mind that there is a lag in the telecast of around 30 seconds or so. तो इसलिए आप अपने, लेट मी जस्ट चेक कितना लैग है। हाँ, 30 सेकंड्स का लैग है, तो 30 सेकंड्स का लैग है, इसलिए वट एवर आई एम स्पीकिंग हैज बीन हैपेंड 30 seconds ago, so you have to take your own decision in any trades. I am not responsible. You have to make your own concerned informed decisions. So this can be a juncture where we can face short covering, और 2 बजने वाला है, तो you have to be careful. Any questions, any queries, or anything you would like me to comment upon? You might be having some kind of positions which you want me to discuss, so let me know if you want it to be tabled here. जब तक ये प्राइस का मूवमेंट आता है, तो मैं कुछ डिस्कस कर लेता हूँ आप लोग के साथ। तो सबसे बेसिक जो चीज़ है जो प्राइस एक्शन का है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पैटर्न्स। ओके, सो प्राइस पैटर्न हमेशा बनते ही रहते हैं, 5 मिनट्स पे, 10 मिनट्स पे, 1 सेकेंड पे, प्राइस पैटर्न्स हमेशा बनते रहते हैं। अब ये प्राइस पैटर्न्स जब बनते हैं, तो उसका एक बिहेवियर होता है, सेटअप रूल्स होते हैं, राइट। सेटअप रूल्स में वो डिफाइन करता है कि उसका कैसे नेक्स्ट मूवमेंट प्रोबेबली हो सकता है। सो सेटअप रूल में अगर कोई भी मूवमेंट आता है, तो सिंपल सी बात है, अगर एक चीज ऊपर जा रही है तो वो ऊपर जाएगी इन अ लीनियर फैशन और अ नॉन लीनियर फैशन। और जो हमारा जो मार्केट है, राइट, हमारा जो मार्केट है, बी इट एनी कमोडिटी, हमेशा एक नॉन लीनियर फैशन में जाता है ऊपर। वो ऊपर जाता है, वो नीचे आता है।
बिकॉज वो हमेशा एक ट्राई करता है कि उसका प्राइस डिस्कवरी हो जाए, राइट। अब वो प्राइस डिस्कवरी जैसे जैसे होएगा, वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, हिट करेगा, फिर अगेन उसका डिमांड किक इन करेगा, राइट। तो दैट इज द फैशन इन विच द प्राइस मूव्स। अगर ये चीज को आप नॉर्मलाइज कर ले अपनी जिंदगी में, राइट, अगर अपनी जिंदगी में ये चीज नॉर्मलाइज कर लिया कि प्राइस पैटर्न्स आर नॉन लीनियर इन कैरेक्टर, एंड आई एम स्ट्रेसिंग ऑन टू दिस फैक्ट बिकॉज बहुत सारे स्कूल्स में लिनियरिटी को ज़्यादा फोकस देते हैं कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो y is equal to just a function of x. It's not just a function of x. It has to be bounded by a slope. It has to be bounded by the square of x. So इसलिए आपको एक नॉन लिनियरिटी का नॉर्मलाइजेशन लाइफ में चाहिए, राइट।
seeing a reaction to the inside bar. Can we take it little farther? Can we take it farther away? There is a reaction to the inside bar on the 15 minutes candle. Guys, look at, see. 15 मिनट्स कैंडल खोलो और एक कैंडल बना है जो करंट कैंडल के पिछले दो कैंडल पहले वाला और उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बना है. So it's going up. Let's see how much. Let's see how much. Yes, it's going down. Going down now. Going down. I have squared off the put side. I have squared off the put side. I am ready to square off the call side. I am ready to square off the call side now. Can it go higher? Can it go more higher? I have squared off the call side now. I have completely exited from the market. 51,000 is would be the closing profit now. I do not see any wish to continue for any further. This is what would be the takeaway profit for me at this point in time. I do not wish to continue trading. This is where I decide my game. So guys, have you learned anything? Comment in the box. Did you learn anything from this?
So there has to be some learning out of this, that I squared off for a reason, that I did not wish that the market can lead on the lower side, because there were many instances of the data which is pointing otherwise, and that's why I had to cover it. I did very good amount of scalp, gamma scalp. Okay, thank you, Rahul, for commenting. I hope you will take many good things from this session. So that's what you might have observed, that I saw a particular kind of lopsided development, lopsided movement in the price, and I squared off my put side. I let it spike. I gave it full freedom to spike to whatever level it can, and I did half of my put positions, the put selling. Then I also made it further reduced to zero, and then I also squared off my hedge, because I did not want that when the spike happens and when it comes back quickly, my hedge will give me more loss. So I also squared it off. Then I also did not let it slide forever, because I know one thing which I told you just moments ago, that you have to incorporate the non-linearity in your life. You have to make it so normal, and then only you can fully tap onto the benefits of the logical trading. So that's what happened, that when the spike happened, I knew that the spike will continue for a few seconds, for 10 seconds, 5 seconds, whatever, and I also knew that it will not last forever. So that's why I also closed my call position. I completely squared off all of my positions. Now I'm at zero positions here. I'm looking to re-enter only and only with my own terms. I do not feel any force to be into the trade. I will enter only and only when there is a need to do that. Okay. Now my strategy for the next is that I should be selling strangle again, and here I should be defining that 34,800 puts I should sell, and that I will only enter when I feel so. Currently I do not feel to enter into any trade. Let's see how it develops. So on the put side, currently the price of 34,000 has spiked. Now if I go on to make it to 34,800, and this one a little bit further away, and the calls I can move it till 35,300 or so. Let's see how much we can do. So if I do this, let's observe the payoff chart.
So if I do this, that means I will get around approximately around 57,000. And let's also do the what if analysis. If there is a fall of volatility of around 1% or 4%, it can be easily the case, then we can get good amount of decay tomorrow itself or today afternoon. So this is the payoff chart, guys. I hope you can understand here. So here I have sold 34,800 puts and I have sold 35,300 calls. I have hedged it with 1200 points away positions, strikes, and that's what we get, iron condor kind of scenario. And if I do the double of this, I will get around approximately 1,75,000 of profit on the expiry. So I plan to do that, but let's see, because I feel that there can be a spike in the premium, there can be a scenario of short covering. So that's why I'm a little bit scared now to enter into the market. I will be doing some kind of movement. Let's see. I'm also doing some data analysis. Let's see if we have anything in place. So if I can make a sense of here, look at it here, guys. There have been instances of long built up happening on the call side, and it is, see, the short covering has spiked it a lot, and on the put side, if you see, long unwinding is happening. So maybe this can be the scenario where a lot of call writing is happening, and OTM now call writing is also spiked, that the calls are written heavily and the put writers are stepping back, and there has been a short covering scenario on the put side as well. So the put side, you can compare here the short covering scenario with the calls and the puts here. अगर ये दोनों को आप कंपेयर करते हो तो इंटेंसिटी देखो, यहाँ पे 20 पॉइंट्स का इंक्रीज आया, यहाँ पे 33.9 पॉइंट का इंक्रीज आया, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा था, यहाँ पे कम था. तो मींस कि जो शॉर्ट कवरिंग का जो इंस्टेंस है वो पुट साइड पे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव आया. करेक्ट, ये हम डिड्यूस कर सकते हैं यहाँ से, राइट. सो वी हैव मेड अ वन डिडक्शन. Now let's see if there is any more interesting thing to take upon. Let's do it 15 minutes. तो यहाँ पे अगर हम देखें, डे लो ब्रेक हो रहा है बार बार. पीसीआर जो है काफी डाउन चला गया, पीसीआर 0.26 ही रह गया, फुल रेड है यहाँ पे, फुल रेड. ऑप्शन चेन को भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें. $35,000 कॉल पे बहुत अच्छा राइटिंग है, और
वो है पल्स का थोड़ा सा अलग सा है। यहाँ पे खोलते हैं ऑप्शन चेन का। सिंपल थिंग वर्क्स, सो सिंपल थिंग इज आई चार्ट्स। सो आई चार्ट में अगर देखेंगे यहाँ पे ओ आई आप देखेंगे सबसे ज़्यादा चेंज आया है। लेट मी टेक द मार्कर हियर। ओ आई चेंज देखो, ओ आई चेंज, ओ आई चेंज अब यहाँ पे जो आया है तो सबसे ज़्यादा जो आ रहा है 35,000 पे आ रहा है। और सेम थिंग पुट साइड पे भी ऐसे ही हो रहा है। सबसे ज़्यादा चेंज भी यहीं पे आया है, सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड भी यहीं पे है। और जो पुट्स का जो अनवाइंडिंग हुआ है 35,500 पे हुआ है सबसे ज़्यादा। जिसका मतलब मार्केट नीचे ही जाएगा, बिकॉज कॉल का देखो हर जगह यहाँ पे पॉजिटिव है, पुट का आधा पॉजिटिव है आधा नेगेटिव है। पुट राइटर्स ऑन द हायर टेरिटरी वो डर गए हैं, जो बहुत ही ऊपर इन द मनी जो सेल कर रहे थे पुट्स, वो अब स्टेप बैक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो इन द मनी पुट सेल कर रहे थे अब उन्होंने स्टेप बैक कर दिया है। एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली जो कॉल राइटिंग है वो चलते ही चले जा रहे हैं। तो दैट मीन्स there is a good amount of support for the call writers, but but the thing is जो इंटेंसिटी से फॉल होना चाहिए 35,000 जैसी ब्रेक होने के बाद, वो अभी 2 बजे के बाद ही हो सकता है। So we still have a lot of time left now, not lot of, I guess 2 minutes only। देखो जैसे ही हम लोग एग्जिट करें उसके बाद कोई मूवमेंट भी नहीं आया है। अगर अब मैं विक्स की बात करूं, विक्स थोड़ा सा पुल अप हुआ है तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट है। अगर नॉन डायरेक्शनलिटी को अगर मैं रिज्यूम कर लेता थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा सा एज और मिलता। But nevertheless, I'm quite happy with whatever we got here. So let's also make some ready things here। कुछ चीज़ें रेडी रखेंगे यहाँ पे सेल करने के लिए। Again, there is an intensity of a downfall now. Will it continue? Will it continue and make day's low broken again? Yes, yes, yes. It is breaking day's low now again. Can it go more lower? There is an instance of short covering on the put side, as just now mentioned. Can it go a little bit more longer on the downside? How much fall is there for us? VIX has started to increase now again. So that was the perfect time for me to exit from the market. VIX is increasing now. Guys, hit the like button if you like the video and if you want more of the people to know about these sessions, and it will also keep me motivated and I'll make more of these sessions. Look at the chart of 15 minutes Bank Nifty. Amazing. If you guys will be quite regular to the sessions like this, what I'll do is I'll try to structure it more. I'll have
a 5 minute kind of warm up session in the morning. I will try to tell what things will I do today in the morning and what strategy will be there in place, and you guys can look upon it and try to learn from it. So again, this looks like a trap to me now. एक स्पाइक बनाया है, एक रिवर्सल कैंडल बना दिया है 15 मिनट्स पे. Will it continue now on the upside now? Let's see.
witnessing that there is a no follow up and there was a reversal candle, and which is giving a follow up on the upside. Can it sustain?
It's getting a little bit challenging right now. There are not many movements on either of the sides, even though 2 o'clock have been surpassed. So I just have nothing left just to stretch on my chair. बहुत boring हो गया है. So that's what I said, that I was not feeling confidence when the market went down, because there was, when whatever analysis we did, there was limitation for it to go down. So that's why we adjusted. So मैंने जो बोला ना आपको, अगर आप सारे सिनेरियोज की स्टडी एक बार कर लोगे ना, सबको रिवाइज करोगे ना, ब्रेन अपने आप डिसीजन लेगा. यू नो, योर ब्रेन हैव दिस नेचुरल miraculousness. It calculates in a super fast way, और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपने बढ़िया डिसीजन ले लिया. That is why I say that you have to let it slide. You have to let it know when to act, and definitely you will be rewarded.
So now I expect that there would be some kind of short covering. It's very good time to to have that. Let's see how quickly it happens and how well it happens. So yes, I can see some sort of short covering now. Can it skip the black line? It's touching the black line now. 35,068 is the level of the black line. Can the call surpass 310? 310 is the point where the average true price is stuck. 310 over here. Can it surpass that level? I'm waiting. Can it do that? I'm ready to sell some puts, but will it sustain? That is the major question. So there are good amount of volumes also, and yes, it should sustain now. It should sustain. I'm selling the puts now again. I have sold 34,800 puts. Let's see how we do. I will be converting it into strangle by selling 35,500 calls. But I want to make sure that short covering does happens. Again, I will sell some puts more. Some more puts I'm ready to sell. I just need perfect opportunity. The 15-minute candle is a massive bullishness, and there was good amount of volume at the 3-minute candle. Can we get a follow from here? Can we get a short covering here? The question, can we get a short covering? As I said that if on the 5 minutes front, the fall should be more than 240 points. Now the fall was not of 240 points, it was just of 219 points. So that gives me another kind of conviction that the fall was limited. So अगर fall एक limited fashion में आ रहा है, that means upside movement आ सकता है. Bears will step aside and bulls will kick in. When they smell that the bears are getting weaker, the bulls will smell the fear and they will kick in and they can lift the market higher. So that is one reason where I am betting upon how the market can fashion itself and how the movement can fashion itself. Let's see. I'm selling some more puts. Some more puts I have sold. 241. If I do not feel any comfortable with this position, I will be exiting it. There is a fall in the VIX, that is good thing. There is a good amount of candle being formed on the lower side of the 15 minutes candle. So हमेशा यही होना चाहिए, मार्केट को एक पुश मिलना चाहिए, एक पुल बैक होना चाहिए, उसके बाद ही अपसाइड मूव होना चाहिए. तो 15 मिनट्स कैंडल वो विक अभी फॉर्म कर रहा है नीचे की तरफ. लास्ट 7 to 8 minutes of this particular candle would be interesting to watch. Let's see.
Can we get a spike, continuous spike on the upper side on the 50 minutes candle? Can we get a spike on the 50 minutes candle on the upside? So I have exited now. There is nothing happening on this short, and my confidence is also getting lower because this has skipped. Yes, I had to exit this position somehow. I'm looking to enter 35,200 calls. So as you can see that how the black line again was contested, and that's what I thought that this would break the black line on the upper side. This will go like this, but it's making its own decision. This was a zone of congestion. Now it is exiting that congestion zone. So now it's exiting. So if it breaks this level and jumps like this and go, then can go a little bit longer downside.
So a quite challenging scenario has happened with me that my profit has almost halved now, approximately 28,000. So this has happened when I was doing some gamma scalp, and there's always a risk associated. That's what my trading style is, and I've done this because I expect that there can be a good amount of short covering on the upside, and I'm just waiting for a good amount of spike. It's gonna be 3 o'clock, and the VIX has also cooled off. So these things have motivated me to play some directional move here. Let's see how much directionality can we get. So we are getting some amount of movement on the upside now.
I expect that this should translate into short covering, though my expectation for the short covering is being waited for quite long. Even yesterday I did that, but it did not come. So considering the history of the failure of the short covering, I will not be too much optimistic. But yes, I'm looking forward for some amount of short covering to happen. Can it happen bigger, weaker, stronger? We do not know, but it should happen. So yes, we can get some amount of short covering now. Guys, we can get some short covering. This is what I was talking about. This is what I wanted, a spike, a good amount of spike on the upside so that I can get some gamma scalp and I can convert my position into non-directional. That is what I talk about, this stop pause strategy. We are back to 40,000 profit now. This is what the consistency looks like. You wait patiently, and now also there can be a scenario that this can lead the market lower because the case that the black line is touched. So I do not know what can happen, but I am considering all kind of scenarios, right? That is what we should do. We should consider all scenarios and we should take a prudent decision accordingly. There is a good amount of volume. This is a perfect scenario for the short covering. If it continues, if the bulls take it up, they can take it surpass 35,000 level, and again the resumption of the bulls can happen today. How will it happen and what scenario, in what fashion? Let's look at the 1 minute chart here of 35,200, which currently I'm selling 50% of the quantity, almost 40%. I want it to slide little bit upwards towards 250 level, then I will sell it more. This is how the option seller works. They will spike the premium, they will wait patiently, and they will sell from there on. They will trap the option buyers from there and they will sell more. Guys, I hope you like these sessions, and if you want me to do more of these, please hit the subscribe button and you will be notified about whenever I go live. Yes, can it skip the black line? 40 seconds left. There is some amount of lag in the telecast, so please be aware about it. ये ब्लैक लाइन को तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, ये एक बिगर क्वेश्चन है. अभी सिर्फ 15 सेकंड रह गए हैं. Can it break it? It has went very near to the black line. Let's see, let's see. Yes, yes, yes. It has broken that. Perfect scenario for the black line, for the trend, and for the short covering now. For the short covering to happen. Perfect scenario, perfect scenario. I want the short covering to happen now. Not any later, not any late. Right now. Right now it should happen. The short covering must be there in the market. It has to be there. It has to be there. Come on, come on. I want the 35,200 to spike towards 250 level, then I will sell it more. Come on, short covering. Come on, 35,000 level in the bank nifty should come in place, and from there on I will sell it more. Yes, yes, yes. There's a break in the trend also. This is a perfect scenario for the short covering. As I was saying, I do not want it any later. I want it right now on my desk to be served. अभी शॉर्ट कवरिंग का परफेक्ट सिनेरियो गाइस. अभी
30 सेकंड रह गए 5 मिनट्स कैंडल का, और वो ब्लैक लाइन को ब्रेक कर रहा है। ब्लैक लाइन को ब्रेक करते ही एक अपसाइड मोमेंटम आना चाहिए। लेट्स सी। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया मार्केट। दीज काइंड ऑफ मार्केट हेल्प यू बिकम more robust, more versatile and help you become experienced. See, experience तो आप पूरा दिन बैठे रहो मार्केट में, एक्सपीरियंस थोड़ी ना होता है। एक्सपीरियंस तो जब आपको अलग अलग सिनेरियोज जब आपको पास मिलेगा तब आपका एक्सपीरियंस लेवल आता है। दिस इज द डे टू गेट एक्सपीरियंस की शॉर्ट कवरिंग कैसे होती है, कब आती है, किस टाइम पे आती है। यस, 236, I wanted to slide to 250. If it does not happen, I will not wait more, I will just sell it anyhow. 232, at 232 I will sell. 233, 30, no, 30 will not. Oh yeah, we are slipping it. Can we get it? Can we get it, guys? Can we get it? Short covering should happen now, any moment. The last 15 minutes of the market would be lethal, because this is coming at a right time of short covering. Yes, 234, 232. And it is losing some momentum now. Some loss in momentum. Some further loss in momentum. Waiting for the spike. Yes, yes, yes. Another attempt happening. 230, 231, 232, 236. Come on, come on. Need some kick and follow up. Some kick and follow up. Some kick and follow up. And some volume. Yes, yes, 231, 233. Last 1 minute would be very crucial of this 5 minutes candle. 234. 234. Come on, come on, come on. There is a decline in the VIX. This is a perfect scenario, guys. Everything is aligning for the short covering now. Yes, the candle is current candle of 5 minutes is also bullish in character. It has surpassed the black line, spending some time, taking a pause, and then shall resume its upside trend. 30 seconds left for the 5 minutes to close.
Can it happen on the upside? 231. 20 seconds left. There is some loss in momentum. Loss in momentum is what I do not like. Short covering happens with momentum with one go, and the loss in momentum I will not like at all. Waiting for a spike, waiting for a spike. Spending good amount of time at the black line. This is good for us. Yes, a 15 minutes candle looks beautiful in terms of bullishness. Looks beautiful, beautiful. And that's what we need. We need a beautiful candle which will define the bullishness, which will give us the sense of confidence to the bulls, and which will give us the sense of fear to the bears. They will step out and the bulls will step in, and then we can have a perfect rally, perfect short covering scenario. 15 minutes candle shaping quite well. There was no wick at all on the lower side. Everything was filled. A full bodied candle, full bodied bullish candle with volume. Everything is aligning so perfectly, so well. We just need a pinch of momentum which can continue this on the upper side. Can it happen in the next 2 minutes? 2 मिनट रह गए हैं. क्या हमें मिल सकता है वो मोमेंटम जो हमें चाहिए शॉर्ट कवरिंग के लिए? Yes, 240, 241, 242. Yes, we are getting that momentum, guys. This is what I was talking about. I am selling the calls now again. This is what I was talking about, that we will get a momentum on the upper side, and at last we got it. And this is with a beautiful, beautiful kind of candle, and this will surpass to 35,000. And I will also shift my puts upwards because I feel that there is a more chance for the market to go on the upper side than on a lower side. So I will cover my this is what the short covering is. This is what the short covering is. This is what the short covering is, guys. $250 it has reached. Imagine I become an option buyer, I will be more successful, right? But it is not the case. I want to be successful consistently. I don't want to be successful only once in a day. And for scenarios like these happens once in a week. So I do not want to be a breadwinner only one time. I want to be consistent with my performance. Perfect short covering, perfect, perfect, piercing the black line, going upwards. No wicks at all on the lower or the upper side. This is a perfect death trap for the bears. Guys, if you like the video, do hit the like button. This will help other viewers to know about the quality of the video you're watching, and definitely it will also boost me up to present
sessions like these in the future. Very good amount of volume. So this is the kind of volume we need for the short covering, and short covering should resume now from here. I'm looking for a short stop loss strategy on the call side now, because I believe that this short covering was believed to happen by me, and that was believed and that was conceptualized. And when things are conceptualized and it happens according to you should let it longer to run. It should not be short time, it should be happening for a longer period of time. Rahul, I hope you liked the session. These I'm conducting only for my students, but I also want other people to join in and take the maximum benefit out of it. No harm to spread the knowledge. It will only increase with the sharing. Since only for 40 minutes are left in the market, there might not be much of an action here. And India VIX has declined to 1%. It was up with 3% and declined back. That means there is some side of subsidation which has happened in terms of the fear in the market, which has been subsided. If you have any question, please comment in the chat box. Let me know what you feel like. Thank you, Rahul, for your kind comments. Yes, definitely. If I am, buckled up to conduct these sessions, definitely I will bring it up every day. Now, can we get the following 15 minutes candle to spike on the upper side and end the day with the short covering takeaway? Can it happen? Can it happen now? Looks like it has every intention to do that, but let's see. Can we get a follow-up candle that will prove the short covering was there, it was lethal, it was able to trap the bears in the final session? And also that will also prove that we have regained the psychological level of 35,000. But that will also, at the summary of the day, it will also say that 35,000 level has been weakened. So all kind of mixed things are there, but nevertheless, only the take up story would be that short covering did happen, and it happened very ruthlessly. So I just want that phenomena to be there, and that should be the ending remark of the session. तो आज का जो समरी है शॉर्ट कवरिंग पे ही होना चाहिए, यही मेरा मानना है. अगर साइकोलॉजिकल लेवल 35,000 का तोड़ा भी है, वो वीक भी हो गया, लेकिन उसको दोबारा रीगेन करना एक और अलग में एक अलग चीज ही बताएगा.
तो लास्ट जो 5-7 मिनट्स रहेगा मार्केट में उसमें बहुत ज़्यादा एक्शन मिल सकता है। तो दोज हु आर देयर विद द पोजीशन, अगर आप कॉल साइड सेलिंग कर रहे हैं तो ट्राई टू मैनेज इट, उसको थोड़ा मूव कर दो और उसको मैनेज करो, या तो स्केल डाउन कर लो पोजीशन को या तो थोड़ा स्क्वायर अप कर लो। अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो थोड़ा सा पुट्स को ऊपर ले आओ। ठीक है, 3-4 सिनेरियोज होते हैं जिससे आप एडजस्ट करके अपना कैरी फॉरवर्ड पोजीशन का कर सकते हो। आई एम ऑल्सो कैरिंग फॉरवर्ड, आई इंटेंड टू कैरी फॉरवर्ड 35,000 पुट्स, I intend to carry 35,200 calls, and I'm looking to get some good gamma scalp here on the call side. I have halved my position. I will be resuming the full. Let's see if we can get in the last 8 minutes. 10 minutes left for the market to close. I need 260, 265 levels on 35,200. Let's see if we can get. Guys, I sometimes I get scared कि मैं इतना ज़्यादा एनालिसिस करता हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ठीक हो जाती है. इट्स गुड टू बी स्केर्ड अबाउट इट, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली मेरा एनालिसिस कहीं ना कहीं फेल ज़रूर होगा, राइट? सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ. जब एनालिसिस करेक्ट हो रहा है उसका फुल फ़ायदा उठाओ, और जब फेल हो रहा है तो उसका जल्दी जल्दी कट करके निकल जाओ, राइट? तो इट्स नॉट मैजिक, it's everything is logical, everything is consistent, and that's why I've been able to do it consistently. Some of the viewers have been following me for the past 1 year, and they know what kind of analysis I present and what is the success rate of those analysis. So yeah, I do not say that my analysis will not fail. It will fail somehow, but majority of the time, like 80% of the time, it will not dishearten you, it will not fail you. It will only prove its metal every time when I present it to you, because only few time I present what has to happen exactly, and it's only one single line, the black line you see here, only one single line which defines the summary of my trade. Look at it.
below this sell, above this buy. That is the simplicity of this black line, nothing else. There is no fancy judgments, there is no conjectures, there is no pollution of indicators, only one analysis, data and black line, price action, volume. All this combined with a lethal combination of option selling, sure short guarantee for a success. Yes, there has been many fan of the black line now. I'm able to develop the community. Thank you, Sudesh. That's what I'm trying to make it. I'm trying to make trading simple for you guys. A single line you can summarize the trading with. No need to pollute it with many of the indicators. Since only 5 minutes left, I will be selling and converting fully my strangle. So this is the end of the story. So this is I'm carrying forward because there is a slide in the VIX. So how much is the premium here? Let's calculate that quickly. 239 on the call side, 240, let's suppose 240 plus 292, 532, and we are also hedging it with the cost of 20 rupees on the call side and approximately 13 rupees on the put side into 450. This comes out to be 2,24,000 should be your profit, additional profit in the expiry. So 50% of this is somewhere around 1,12,000. So on the expiry, we should be targeting somewhere around 1,12,000. So let's see how it happens. I'm not always sure that I will be guaranteed 1,12,000, but whatever is the case, whatever is the kitty offers us, definitely we should be taking that. So I hope you like the video. Do comment, subscribe, and let me know what all sessions do you need and what all uh, content do you need on this channel. I will definitely try to bring it up and inspire. I hope you got inspired and got to know many things. This was again a good learning exercise for all of you. Specifically for the kind of scenario we look forward for the short covering. कई लोग को पता ही नहीं होता है कि शॉर्ट कवरिंग भाई होता क्या है, कैसे आता है. तो आज मैंने लाइव आपको बताया है कि शॉर्ट कवरिंग ये सिनेरियो में होता है, ऐसे ऐसे फ्यूचर्स का बिल्डअप शो करता है, अपने पैटर्न शो दिखाता है और फॉल आया है. वो शॉर्ट कवरिंग का ये सारा एक एक पैरामीटर्स को एक फिट इन करता है, राइट. तो ये वीडियो को अगर आप दोबारा से पीछे जाके देखो ना, शॉर्ट कवरिंग का मतलब 230 के बाद का वीडियो का देखो, 230 के बाद कैसे कैसे एनालिसिस मैंने किया, कैसे कैसे मैंने अपना कॉन्फिडेंस बुक किया. मैंने जब बोला कि भाई ब्लैक अभी शॉर्ट कवरिंग अभी आना चाहिए तो आना चाहिए, तो वहां पे आया ब्लैक शॉर्ट कवरिंग. सो ये जो कॉन्फिडेंस है ये ओवर द पीरियड टाइम आई हैव बिल्ट. तो आई वांट कि आप लोग के पास भी ये कॉन्फिडेंस आ जाए. एंड योर लर्निंग कर्व जो है आपका लर्न करने के लिए, ये फ्री में मैं दे रहा हूँ, सबके लिए दे रहा हूँ. इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ वैल्यू. ये कई लोग तो 40-50 हज़ार दे के भी ये चीज़ नहीं सिखाएंगे, बट आई एम गिविंग इट फ्री बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रो दिस चैनल, राइट. दैट इज माई ओनली मोटिव. सो unless until I do not give you what is exactly there in the trading, I will not be able to grow this channel, right. So I need your support to grow this channel and grow this community, and we can grow together. So all the best, guys. Do take care, and we'll meet tomorrow. Let's see how the Wednesday happens. So usually the Wednesdays are bearish in nature, so let's see what is there for us tomorrow. Do have a look on the India VIX, and do also not to look on the SGX. Do look at the Dow Jones. Look at the natural gas. Yes, if many of you would be interested to trade MCX, natural gas and crude oil, live with me. I am planning to conduct some live session of its trading in the evening, maybe from 6 o'clock to 8 o'clock, only of 2 hours. So if we can manage to organize something like that, I will be quite happy with that. So all the best, guys. Do take care. Have a great day. Bye bye.